नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत है जी आप सभी का योगा बूट कैंप 3.0 में। आज योगा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम और आप एक जर्नी पे जाने वाले हैं, जर्नी ऑफ रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन एंड सेल्फ हीलिंग। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। दिस इज योगा बूट कैंप 3.0। टू बी वेरी ऑनेस्ट, योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इससे आपकी बॉडी में, आपके माइंड में हार्मनी, पीस, ये सारी चीजें बैलेंस रहती है, बनी रहती है। और आज के इस एंटायर सेशन को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि ये एक योगा एक्सपर्ट से लेकर एक बिगिनर सबके काम आए। चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। खोजी जो हमने ये चीज, विदेशी भी देते या मोटी है फीस, खुद की इजाद की खुद की ही जीत, पर भूलो ना तुम ये अपना ही सीख। कोविड के टाइम पे दिया था ध्यान, बॉडी और सोल को दोनों आराम, योगा का योग कर तेरी ही जीत, प्रयास प्राणायाम योगा से सीख है, फायदे बहुत किफायती भी, योगा से होगा बस भाई तू सीख। चले सब साथ में अपनी ये रीत, ये खुद की ही जंग तो खुद से ही जीत। अनुलोम विलोम से रासना, भुजासना, शवासना, योगा के योग की बात ना, ये लेवल है नेक्स्ट कोई पास ना। साथ में चलेंगे सब है साथ की बात, तो साथ में करेंगे सब क्या योगा योगा होगा। चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। कैसा हो अगर किसी चीज को जानने के लिए और समझने के लिए उस चीज के एक्सपर्ट से आपकी बातचीत करा दी जाए। तो आज की इस एंटायर सेशन में हमारे साथ कुछ योगा के एक्सपर्ट्स होंगे, जिनके इंटरव्यूज हम आप तक पहुंचाएंगे, और योगा आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, और सबसे सेफेस्ट तरीका क्या होता है। हर एक चीज का हमने खास ख्याल रखा है ताकि आप तक योगा को हम पहुंचा सके और योगा को आपकी जिंदगी का हिस्सा बना सके। मैं हूँ आपकी नॉन स्टॉप निकी, और आज इतनी ज्यादा खुश हूँ मैं क्योंकि मुझे वो अवसर मिल रहा है जो मुझे लगता है सालों साल एक एफर्मेशन होती है, एक दिल की बात होती है, और आज वही बातें होने वाली है विद समवन whom I really inspire a lot by seeing his words, by listening to his wisdom, और वो मेरे साथ आज मौजूद है, जिनको हम सब बड़े प्यार से दादी कह के बुलाते हैं। और उनके बारे में मैं क्या बताऊं, ऑथर, स्पिरिचुअल लीडर एंड द फोर्थ इन द लाइन ऑफ Raja Yoga Masters in the Sahaj Mark system of spiritual practice. साथ ही साथ President of Sri Ramchandra Mission since 2014. साथ ही साथ Heartfulness Meditation, जो पूरी दुनिया में जो दिल को दिल से जोड़ता है। और आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में आज यही बातें दादी आपके साथ होंगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच। और ये स्पिरिचुअल जो विजडम है, जो आपकी ब्लेसिंग है, वर्चुअली मुझे मिल जाए तो ये आज का जो इंटरव्यू है एकदम शानदार हो जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे पहले ब्लेसिंग मिल जाए। Good to see you, Upasana and dear Nikki. Good. Happy to see you once again and happy to chat with you today. So all the praises that you have showered, I don't know if I really deserve it, but I'm very happy to see you. I remember how we meditated and had our meals together, and it's a joyful moment I can recollect. हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में आज हम इस प्यारे से प्लेटफॉर्म से सबको बताना चाहेंगे कि हर एक चीज मुझे भी लगता है दिल से तो बिल्कुल जुड़ी होती है, पर जो मेरे शायद बहुत सारे दोस्त होंगे आज शायद पहली बार जानना चाहेंगे कि हार्टफुल मेडिटेशन
एक्चुअली होता क्या है? Heartfulness way of meditation means you meditate on the presence of the divinity which is already there in your heart. Every religion, without an exception, believes that divinity is in your heart. And you can feel the presence only in your heart. And when we talk of feeling or experiencing the presence, we are not talking of belief. Okay. Religion talks of belief. Religions say, oh, God is there. But when we talk of spirituality, when we talk of meditation, we want to actualize that belief and say, okay, I like to meditate, and through this meditation, I would like to experience the presence. And once you experience the presence, this idea of belief and faith also becomes redundant because you have already experienced. What more things you want to believe? जैसे हमको कहना है कि कुछ आर्ट किसी को लेना है, तो क्या इसके लिए भी कोई भी एज या फिर कभी भी हम इसे शुरू कर सकते हैं, या आपको लगता है नहीं शायद निकी इसको बचपन से ही शुरू करना चाहिए? इसके लिए जो जर्नी में आने के लिए कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम है, या अगर मुझे आज से शुरू करना है तो क्या मैं आज से भी शुरू कर पाऊं? जितने लोग आज जुड़े हैं क्या वो आज से ही शुरू कर सके? इसके बारे में Well, the best time to begin this meditation is the moment of conception. When that is lost, then the best time to start is the year 15th year. हाँ जी, okay. Before that, parents they meditate, it's enough. You begin your meditation by the age of 15, it's good. अगर आज आप ये बताएंगे कि अगर हम योगा करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक्चुअली में क्या क्या वो बदलाव है, क्या क्या वो इंटायर कनेक्ट है जो हमें मिलता है दादी, तो बेनिफिट्स ऑफ योगा क्या कहेंगे आप? Well, benefits of yoga is at multiple levels, depending upon what we do. So I have a belief that you know it is not just asanas, it is not just acrobatic exercise, it is not breathing away left and right nostril, it is not just any of those 8 steps. It's a combination of all these things, which and ending with dhyan and samadhi. Yoga, as a general term, it has multiple facets, and depending upon which one you are tackling, will nourish that part of the body. And I like to say that don't skip any. Like, when you go for a buffet lunch or buffet dinner, and you pick only what you choose. You choose, pick, and eat, right? But you are at a loss there, see. Here in yoga, you can't leave anything. You pick a little bit of everything and practice all the elements of Ashtanga yoga. Otherwise, you are just taking one item and then, not taking the other item, and your journey will always remain incomplete. And that's why most people don't find enthusiasm to practice yoga, because they pick and choose. There is no total benefit. But what about, how would you find something that can nourish your soul? Wow. Right? And that is pranahuti. And this pranahuti is available only in heartfulness way of system. Wow. Because the yogi of a highest caliber is required who can transmit this pranahuti. No ordinary person will do. तो ये जो डिप्रेशन और ये सारी चीजें इतनी बढ़ती जा रही है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी होता जा रहा है, तो आज हमारे योगा बूट कैंप 3.0 से इनके बारे में अगर किसी को कोई महसूस कर रहा है, कोई कुछ फील कर रहा है, तो सर मुझे एक्सप्रेसिंग वाली बात होती है, या फिर अगर मुझे पता है कि शायद कोई डिप्रेशन में है, तो उससे कैसे एक अपने कम्युनिटी में लोगों को कैसे कोई मदद कर सकता है? Tensions, stress, guilt, everything remains built up. So I would not say meditate and mask and hide your stress. Wow. No. You better face your stress. And don't go on repeating those things that will give you more stress. आज ऐसे और इंटरनेशनल योगा डे दादी, तो एक पैगाम सबके नाम, वो मैसेज क्या होगा जो सब जानना चाहेंगे पूरे दुनिया भर में फॉर इंटरनेशनल योगा डे? Well, I say, people who meditate,
especially. Include everything. Asanas भी करना है, प्राणायाम भी करना है और ध्यान भी करना है. Other things are philosophical, yama and niyama and dharana and pratyahara. They are philosophical aspects. And practical aspects has to be dealt with. सबसे प्रार्थना है या एक तरह की सजेशंस भी है. आप ध्यान तो करते हो, लेकिन आप जब ध्यान प्राणाहुति के साथ करोगे तो देखो आपकी अनुभूति कैसी होती है. एक एक्सपेरिमेंट करके तो देखो. और यदि आपको प्राणाहुति के साथ ध्यान करना है तो बहुत सिंपल है. और हमारा जो ऐप है हार्ट्स ऐप, वो डाउनलोड कीजिए और एक ही बार आप ध्यान कीजिए प्राणाहुति के साथ. सी आपका अनुभव कैसा बदल जाता है, कितनी गहराई में वो आपको ले जाता है और कितनी लाइटनेस, सूक्ष्मता और पीसफुलनेस आप महसूस करोगे. दादाजी ये अनुभव आज ई कॉन्क्लेव के थ्रू हर कोई देख रहा है. हमारे फीवर एफएम वाईटी चैनल, फीवर एफएम के फीवर एफएम चैनल फेसबुक पे. तो अगर आज ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन आपके साथ मुझे और हम सबको मौका मिले तो कैन वी एक्सपीरियंस कर सकते? Oh, why not? If you are listening carefully, pay extra careful attention to these words, and if you can sit comfortably and imagine that the energy from Mother Earth is entering your system and helping you relax each part of the body. Allow this energy to enter through your feet, and as it enters and moves upward, it goes on relaxing your body. Permit this energy to move up further to your lower legs and calf muscles. Let those parts be relaxed. Permit this healing energy from Mother Earth to enter your knees and thighs. Feel the entire hip area relaxing. Okay, now allow this healing energy from Mother Earth to go up to your lower back and upper back. Help them relax. Permit this energy to move in the front, in your abdominal area and your chest area. Now allow these energies to move in your shoulders. Feel them relaxing, almost melting away. Let this energy from Mother Earth descend in your arms, your biceps, your elbow, wrist, your hands, your palm and fingers. Let this energy move in your jaws, helping them relax. Drop your jaw if you have to. Now the entire facial muscles, including your lips, your nose, your eyelids and eyebrows, forehead, earlobes, and top of your head. Now gently focus your attention towards the heart. And remain prayerful with an idea that God, I really don't know whether you are there or not. If you are there, I like to feel your presence, your experience. So please help me. And meditate with this idea that I'm trying to experience that presence
and that is attracting my attention inward towards my heart. Just have this much attention for as long as you can. And sit like this for 20 minutes or so. And when 20 minutes are over, you can open your eyes. If any thoughts disturb, just remind yourself that I'm waiting for that experience, I'm waiting for that divine presence to appeal, to express. So, Nikki ji, that's all about it. I have no words. Wow. Thank you, Daji. I think Thank you. Thank so you. much for this opportunity. Thank you. All the best to you. Yoga for peace, Nadi Shuddhi. The word Nadi Shuddhi literally means cleansing the nadis. When we say nadis, we are not talking about the 72,000 because these 72,000 are only a branch out of the two basic nadis, the Pingala and the Ida. 36,000 branching out from Pingala, 36,000 branching out from Ida. This is the energy physiology of a human being. When we say Nadi Shuddhi, we are talking about cleansing fundamentally the Pingala and Ida so that energy system will work in balance. There is a connection between your breath and your mental structure. To bring balance to your thought is a very important step that you need to take if you want to bring balance to your activity, your emotion and the results of your life and the impact that you have on other people's lives. Nadi Shuddhi plays an important role. Here are a few guidelines that will set optimal conditions and greatly enhance your receptivity of the practices. Please ensure cell phones are either in silent mode or switched off. It is advisable not to sit for the program with a full stomach or immediately after a meal. Please sit with your spine comfortably erect, hands uncrossed, and palms open. These conditions will prepare you to be in a heightened state of receptivity and derive the most benefits from the practices. These practices are very safe and simple and can be done by anybody. The practices we will be learning here can be done by anyone ages 7 years and above. If you wear glasses while doing the yoga practices, please remove them and keep them aside. How to do Nadi Shuddhi? She will demonstrate. Please observe. Sit in a cross-legged posture with your spine comfortably erect, eyes closed. Left hand should be loosely placed in the middle of your lap, palm facing upwards. Use only your right hand. Use your thumb and ring finger. Fold your middle and index fingers. The ring and little finger are held straight and side by side touching. Now block your right nostril with your thumb and inhale through your left nostril. After the inhalation is complete, exhale through the same. In a similar fashion, using the ring finger, block your left nostril and inhale through the right nostril. Then exhale through the same. Again, block the right and open the left, inhale and exhale. Continue like this. Be focused on your breath. So when you do this Nadi Shuddhi, what is most important is to breathe fully in and fully out, as slowly and as gently as it is possible for you.
You should not make any sound when you exhale or inhale. So for this to happen, you just need to remember one basic point so that Nadi Shuddhi happens by itself. You will always switch after every exhalation. So that means whichever nostril you inhale through, the same nostril you exhale through. You do Nadi Shuddhi for a minimum of 4 minutes. A few corrections for the practice. Do not keep your left hand on the thigh. The left hand should be loosely placed in the middle of your lap. To clarify, on the right hand, you use only your thumb and ring finger. The ring and little finger are held straight and are side by side touching. Fold your middle and index fingers. If you are unable to hold them straight, do it as best you can. Also, there is a tendency to keep the head down or turn to one side. Unconsciously, your face may tilt one way or the other. Your head should be straight. If you maintain this, your system will come to a balance very quickly. Ensure not to press too hard on the lower part of the nostril. Locate the septal bone on your right nostril. Just a millimeter beneath that, if you place the thumb, with very minimal pressure, you can block the nostril effectively so that no air can escape. Ensure you are not breathing shallow, doing normal breathing, or holding the breath. The breathing should be fully in and fully out. Peace is not the ultimate goal of life. It is the most fundamental requirement. If you hold it as the ultimate goal in your life, you will only rest in peace. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram. How have you been, Sadhguru? Like this? Now, September 2014, Honorable Prime Minister proposed the idea at the United Nations General Assembly about an international day for yoga. And 21st June 2015, we celebrated the first International Yoga Day. Ever since, we've seen multi-fold awareness for yoga in our country. What is your perception? Have you seen yoga's perception change in our country and outside? Has this been a success? I think in our country, probably in schools and other places, definitely the perception about yoga has changed significantly. In our country, I don't think the adults have taken to yoga as they should have. But in the rest of the world, it's a big thing. Since the International Day of Yoga, rest of the world, the governments in the world, almost every other nation has taken it up and brought in yoga programs and variety of other things in their universities, in their offices, particularly in the Middle East, big time yoga. Wow. So, has it made a difference? It's made a significant difference, no question. People think, oh, International Day of Yoga, one more day for something. There is also bubble bath day and there is a lipstick day, there is a pedicure day. So this is one more thing. No, that's not how it's worked, because this was passed, this was not cooked up by somebody, this was passed in United Nations with the maximum number of countries ever supporting one resolution, which is the International Yoga Day's resolution, and nations have taken it up in right earnest. United Nations has taken it up in right earnest. United Nations has included yoga as one of the tools to fulfill their SDG goals, which is not a small thing. So definitely worldwide, the awareness of yoga, even if everybody is not practicing yoga, at least they know it is something good to do in their life. Some questions from our listeners. Ram from Chennai asks that, do I need to be on a vegetarian diet to practice yoga? See, diet is fuel for the body. What kind of fuel your body should consume depends on the design of the body. If you buy
a petrol vehicle and put diesel in it, you know it won't work. So it is not for me to say eat this, eat that. You must eat what is most conducive for the system. That means you must be willing to observe, not simply eat because your parents were eating something or your friends are eating something. You must pay some attention. If you do not know how to pay attention, we can help. How your body responds to every kind of food that goes into it. And the idea is to optimize this life, because after all it's a brief amount of time. If you put in the wrong fuel, obviously you will not be at an optimal level, and that's very sad. People are asking me again and again, one common refrain everywhere is, Sadhguru, how do you manage this? There are days where I've ridden over 18 hours a day, okay? There are days where I've done over 900 kilometers per day. So how do you do this and still you're walking in? This is 529th interview or event that I'm doing since March 21st, okay? So literally even when I'm writing, I'm doing interviews. I'm not just writing, I'm continuously talking to the media and other aspects. So people are asking how? So you must understand, you must do the right things about the body. If you do the right things about the body, it will do tremendous things for you, and it's a brief amount of life. If you do not eat the right things, if you do not do the right practices, then all that will happen is, it's not a question of my choice versus your choice. Life will go waste. Is that your choice? Harsh from Kanpur says that, asks that is yoga enough, or should I do cardio and weightlifting? Because that's a question that youngsters today grapple with. Yoga does not mean twisting, turning, doing exercise. It means something totally different. Do not even compare with this and that, cardio, whatever. Well, I don't want to talk for or against anything, but simply building large muscles is not the way of the body. Muscles should build in a tenacious way, not just puffed up like a puri. Right. Kirti says that she's expecting 6 months to go before the day. Never done yoga before, so what kind of yoga should she do? There is a program called Thai Mai, which means motherhood. There is a simple practice, not just about a practice. It has various processes about food, nourishment, variety of things for expecting mothers. She should go through that. It's available even online, I think now. It's available online. Ramesh says that, he's seeing a lot of young people lose their lives to heart attacks. Singer KK is the latest case. From a yogi's perspective, how do you see it? Is COVID playing a role here? And how can we fix this? Well, what COVID has done is different. Yes, it has happened to some people, unfortunately. But this is a case of a regular, infraction of the heart. This can happen to anybody if you do not take care of what you eat and how you are within yourself. There are indicators in the body which we are not paying attention to. We think only a doctor has to tell us that we are sick. No, if you pay enough attention, you know when the body is not there. But it's unfortunate young people like this die, and also that Rajkumar in Karnataka, in the gymnasium itself, he passed away, a very wonderful man. He was also part of our Kaveri Calling and Rally for Rivers in a big way. A hugely loved human being by people, not just for his stardom, as a human being, hugely respected and loved by people, but unfortunately we lost him. This is one danger of extreme exercise, because the system can build up over a period of time and be able to do extreme things. But if you start doing extreme things without that necessary build-up, it is possible, not always. Many people may get away with it, but it is possible certain constitution could fail. Whatever the autopsy report of KK is saying, there was fat accumulation around the heart. That definitely cannot be because of COVID. That is a lifestyle issue. It's unfortunate that young people have lost their lives like this. Okay, this one is on behalf of all the artists. Our voice is our strength. Is there any yoga, asana or process that will help us become more effective? As voice? As voice. Oh, definitely. Come along, let's do something.
Okay, so let's… There is no other yoga. We can teach you a certain yoga which makes your vocal cords well modulated, and the important thing is what you wish to do must happen, all right? If what you wish does not happen or your faculties refuse to do that, that is a wasted life. So certain investment has to be made. The amount of time and energy people are spending on social media and socializing, a dinner takes 3 hours. I eat in 15 minutes max. People take 3 hours to eat and they eat 3 meals. I eat 1 meal and I finish it in 15 minutes, all right? So you have a lot of time to other things rather than what you care for. What you really care for, that's where your investment should be. So if you're interested in that, please come, we can help you definitely. How important is it to package and present yoga in a cool way? Whatever that cool means, because what is cool essentially means what is attractive to the youth or whatever. It's very important that you don't mess with yoga. Presentation, you can make it cool. Don't try to do other funny things like in United States they're doing dog yoga, they're doing bear yoga, they're doing gun yoga. With guns they're doing yoga. So, when you stand on your head, you may shoot yourself in the head with a gun yoga. So, don't try to make yoga cool, it is the coolest thing in the universe. Being connected with anything and everything around you is yoga. Yoga means union. Being connected with life is the coolest thing to do, there's nothing cooler than that. So don't try to make yoga cool. Presentation, of course you should make it cool. Well, I thought I'm cool enough for it. Yes, you are, that's why you are there. Thank you, Sadhguru, thank you so much. चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो खोजी जो हमने ये चीज विदेशी भी देते या मोटी है फीस खुद की इजाद की खुद की ही जीत पर भूलो ना तुम ये अपना ही सीख कोविड के टाइम पे दिया था ध्यान बॉडी और सोल को दोनों आराम योगा का योग कर तेरी ही जीत प्रयास प्राणायाम योगा से सीख है फायदे बहुत किफायती भी योगा से होगा बस भाई तू सीख चले सब साथ में अपनी ये रीत ये खुद की ही जंग तू खुद से ही जीत अनुलोम विलोम से रासना भुजासना शवासना योगा के योग की बात ना ये लेवल है नेक्स्ट कोई पास ना साथ में चलेंगे सब है साथ की बात तो साथ में करेंगे सब क्या योगा योगा होगा चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो कुछ चीजें इनसे आज आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए जैसे कि नंबर 1 आपने लाइफ में कभी योगा शुरू भी नहीं किया है नंबर 2 आपने रेगुलर कभी योगा किया ही नहीं है नंबर 3 आप रोज योगा करते हो ये कुछ 3-4 ऐसी चीजें जिनसे आज फर्क जरा भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आज योगा को हम हर किसी के लिए लेकर आए हैं Namaste and greetings to everyone on this International Yoga Day. Yoga has multiple benefits. It can make our life so much better than what we could even imagine. It can make our body strong. It brings focus to the mind, especially for students. They will simply love it and
study becomes an effortless process for them then. You don't need to struggle, but your memory becomes sharper, your intellect becomes really brilliant, and overall our energy becomes very positive. Today, in this situation of pandemic around the world where mental health is the biggest challenge, depression, anxiety, fear, when these negative emotions are taking over the human life, yoga is a boon. Yoga is the gift to humanity. It can help us to sail over these tough times. So, without any prejudice, we must practice yoga. It doesn't in any way interfere with one's belief system. Like if you are eating a burger, it doesn't interfere with your religion. If you are driving a car, whatever brand car it is, it doesn't interfere with your faith. So yoga does not interfere your faith. If at all, it can only make your faith more stronger. So we have to see yoga as a science of well-being. Yoga can improve our relationship with people, our behavior with people. So it has behavioral science, it has mental science. It makes our emotions very stable and our intuitive ability very strong. For every businessman, you need intuitive ability and entrepreneurship. I tell you, yoga can provide that. So, all in all, yoga is such a boon or gift to mankind that nobody should be deprived of it. Because everyone has right to peace. Everybody has right to be in deep love. And everyone has the right to be healthy. Everyone has right to be at peace. And everyone has the right to access to the ocean of love that we are. So, once again, let us all celebrate this Yoga Day, observing our COVID protocol, keeping the social distance. You can do it at home or in small groups as norms of your city allows you. But make sure that let this goodness of yoga reach to every doorstep. Let everyone be healthy, let everyone be happy. Let's celebrate our presence on this planet. Harmony in diversity. We're all different. We are different people with different languages, with different attitudes, with different likes and dislikes. But one thing that can bind us all, that is human values. And yoga is the best tool for us to blossom in human values. It can help us to get rid of stress, physical fatigue, emotional turbulence, and will bring mental clarity. Let me also congratulate all the yoga teachers. It is your day and you have been striving so hard to bring the goodness of yoga to general population. Continue doing it and let more and more people become teachers of yoga and share their wisdom, their goodness with everybody else. Let's all together create a stress-free society, a happy society. All the best to every one of you. चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को दें ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो
आगे चलो दुनिया को दे ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो खोजी जो हमने ये चीज विदेशी भी देते या मोटी है फीस खुद ही इजाद की खुद की ही जीत पर भूलो ना तुम ये अपना ही सीख कोविड के टाइम पे दिया था ध्यान बॉडी और सोल को दोनों आराम योगा का योग कर तेरी ही जीत प्रयास प्राणायाम योगा से सीख है फायदे बहुत किफायती भी योगा से होगा बस भाई तू सीख चले सब साथ में अपनी ये रीत ये खुद की ही जंग तो खुद से ही जीत अनुलोम विलोम से रासना भुजासना शवासना योगा के योग की बात ना ये लेवल है नेक्स्ट कोई पास ना साथ में चलेंगे सब है साथ की बात तो साथ में करेंगे सब क्या योगा योगा होगा चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को दे ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को दे ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो नमस्कार सम पीपल से ये योगा मुझसे नहीं होने वाला आई हैव बीन टीचिंग योगा फॉर मेनी ईयर्स एंड आई वुड लाइक टू अश्योर यू दैट योगा सबसे जरूर होगा Yoga has numerous benefits for mind as well as body. Today, I will be showing you some yogasana sequence that is good for beginners who are in good health. In this 10-minute sequence, we will be focusing on some easy yoga asanas. By the end of these practices, you will feel more relaxed, centered and energized. Remember to listen to your body language and push only that much which you feel comfortable. So, let's begin with the asana sequence for the beginners. So now understand how to do these asanas. Talasana 2. Stand straight with 1 foot gap between 2 feet. Hands besides your body. Now, inhale, raise your both the arms up and simultaneously stand on your toe. Stretch yourself upwards fully. Hold your breath for some time. And while exhaling, rotate both your hands from behind and simultaneously bring your heels also down. Both these movements, hands and feet movement should be properly synchronized. Along with it, breathing also should be synchronized. You should take a full breath in, hold full breath out and stay. For Konasana 2, stand straight with 3 to 4 feet gap between your both legs, hands besides your body. Now, raise your right hand from the side, palm facing upwards and bring your arm up to your ear and your head and arm and the whole body should be bending to the left side. With all this, you have to inhale fully. Stay there for some time and then slowly while exhaling, come back to the original position. Repeat the same thing on the other side. This is a very good stretch on your waistline and do as much as possible. Third is standing Vakrasana. Keep 2.5 feet gap between both the legs, feet parallel to each other firmly. Get both your hands up at the shoulder level, palm facing downwards. Now looking at your right fingertip, twist your whole body from the right side and go behind. Do this while exhaling and then while inhaling, come back to the normal position. Repeat the same on the other side. Fourth asana is Yoga Mudra. Sit on the floor in Sukhasana or in Padmasana. Hold your left wrist with the right palm behind. First, while inhaling, roll your shoulders back and then while exhaling, try and relax your shoulder and bend forward at the center. Stay there for some time and come back again. Now Parvatasana. In Parvatasana, raise your both arms up from the side and join both arms in Namaste position above your head. Stretch your whole body upwards. Hold the breath for some time and then while exhaling, turn your palm outwards and roll it, rotate it and bring it down back to normal position. Now let's do Bhujangasana. Here, person has to lie down
on stomach. In Bhujangasana, lie down on your stomach straight and put your forehead on the ground. Both the palm facing downwards, aligned with your chest. Elbows upwards, not protruding out with the body. Now slowly while inhaling, first raise your head up, then neck, and then little bit shoulders up. Look upwards, and then while exhaling, come back to your normal position. Another posture is Yastikasana. Here you lie down on your back. While inhaling, raise both arms up above the head and simultaneously put your toes outwards so that your whole body is in a stick way. Arm movement, foot movement and breathing movement all should synchronize together. Neuromuscular coordination. Stay there for some time and then slowly while exhaling, relax your whole body. Bring your arm from front to the normal position, both the toes again in a relaxed position. Now let's do Pavan Muktasana. Now lie down on your back straight. Now gently bend your right knee and get it towards your chest. Try to hold your shin of the right leg with both the arms. While doing all that, you are supposed to exhale. Hold it for some time. Inhaling, release your leg, get it to the static position. Do the same thing on the other side with other leg. And finally, when you have done with each leg, then do the same thing with both the legs. Now let's do Haspada Gushtasana. Lift your right leg straight above as much as you can. Try to hold the toe if possible, otherwise stay in that position for some time with raised leg, and while exhaling, bring it down. Do the same with the left leg. Exhaling, lift your leg up. Do the same on the side. While exhaling, take your right leg towards right side to try to touch your toe. And bring the leg come back. In all these movements, your legs should be straight. And now finally, let's sit quietly in Sukhasana position. Both legs crossed with each other. The distance of knee should be even from the ground. Arms, both the palms on your thigh. Relax your shoulders, relax your elbows. Sit straight. And now, close your eyes and try to see that you are just watching your breath. Stay in this position. It's a beautiful meditation technique. Sit in this position for some time, as long as you are free from thoughts, and stay in a quiet state, and then open your eyes. So, this is the sequence to be followed for the beginners. This sequence will help you to connect your body and breath. Doing these asanas in the morning will help you to reduce your dullness and tamas, so that you will begin your day with high energy and positive strength. It also helps you to be more mindful and calmer in situations that are challenging. So motivate your body to follow these routines. Practice yoga regularly and stay fit from the inside and from the outside. Namaskar. आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को दे ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को दे ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो खोजी जो हमने ये चीज विदेशी भी देते या मोटी है फीस खुद की इजाद की खुद की ही जीत पर भूलो ना तुम ये अपना ही सीट कोविड के टाइम पे दिया था ध्यान बॉडी और सोल को दोनों आराम योगा का योग कर तेरी ही जीत प्रयास प्राणायाम योगा से सीख है फायदे बहुत किफायती भी योगा से होगा बस भाई तू सीख चले सब साथ में अपनी ये रीत ये खुद की ही जंग तू खुद से ही जीत अनुलोम विलोम से रासना भुजासना शवासना योगा के योग की बात ना ये लेवल है नेक्स्ट कोई पासना
ना, साथ में चलेंगे सब, है साथ की बात तो साथ में करेंगे सब। क्या योगा योगा होगा, चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो। सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को दे ये अपनी है ब्रो। हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो। सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो। हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। 2022 June 21st is the 8th consecutive year we are celebrating International Yoga Day. There was a time when yoga was considered weird and exclusive to some people, but today more than 1/3 of world's population is practicing yoga. Let's encourage more and more people to adapt yoga as way of life, because yoga can keep us healthy, happy and peaceful. We all have to work towards creating peaceful societies and peaceful nation. For that, the basis is individual peace. When an individual is strained by aggression or depression, it is the yoga that can lift us up from this despondency, this weakness, to be a more strong, stable and happy individual. And happy individuals make better communities, and that would in fact roll down into world peace. We are going through a very tough time in the world today. After 2 years of pandemic and then the war and the inflation has really taken a toll of human life, and the suffering has increased. Yoga is a way to find the inner strength to sail over this tough time and to be more creative and productive in our endowment. So let us bring the goodness of yoga to all sections of society, to all stratas of society, and hope to enhance the participation of International Yoga Day by next year. And another important point that we have to pay attention is we must stick to the authentic form of yoga that can open the door to higher dimensions of our own consciousness. It offers us the treasure of wealth, wisdom, knowledge, and let's not make it a frivolous exercise. It's not just an exercise. We must know that yoga has its depth and dignity and can offer beyond our wild imagination, add new dimensions to our life, bring happiness and love and serenity, and increase the positive vibes in our life. So we must focus on the authentic yoga traditions. Namaste. ख़ातिन-हज़रात, आप हैं आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ। और देखिए, प्यार मोहब्बत के जितने मसले होते हैं वहाँ पे तो आपका लव कोच काम आ जाता है, पर ये दुनिया ना सिर्फ प्यार मोहब्बत से नहीं चलती है। एक और चीज़ है जो इस दुनिया को चलाती है, और वो है the way we breathe, the way we stand, the way we talk, the way we walk। और उन सब में एक चीज़ जो एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है वो है योगा। मैं हूं राहुल माकिन, और आज मेरे साथ हैं द वन एंड द ओनली वन नम्रता मेनन, हु इज अ योगाचार्य, योगा शिरोमणि एंड योगा भास्करा। एंड आज इनके साथ कुछ योगा से रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस होंगी, कुछ बातचीत, एंड ऑफ कोर्स ये सेशन बहुत एनलाइटनिंग होने वाला है। सो नमस्कार। Namaste. हाउ आर यू मैम? Thank you very much for having me here. I'm very well, and
I hope we enjoy this conversation together. So first of all, before I start this conversation, if I start reading about her, पूरा का पूरा interview उसी में निकल जाएगा. So I would skip the introduction part because she has achieved various levels. She's actually taught yoga in internationally, बहुत सारे countries में, and especially Goa में, where she started her career as a yoga teacher. तो बहुत सारा कुछ है इनके बारे में बताने को, but अगर हमने वो start कर दिया तो ये सारा skip हो जाएगा, which is very important. So Namrata, I would love to ask you the first question. Your journey into the world of yoga, how did it start and how did this influence your life? Because I've heard that after you entered into this field, you actually left everything and abhi tak फिर आपने सिर्फ yoga को पकड़ा. The journey you take has to do with your mindset. True. So I arrived at the corporate sector, some 30 years back, and I did very well there. But I think my mental mapping was such that I was very inward driven, and while the corporate sector provided me with a great outward life and was extremely enjoyable while I was there, yoga acted as some kind of bolte hain chumbak. It was just like a magnet, pulled me to it, and once I reached that door, I think I never looked back. So what was that point where you actually felt कि नहीं बस this is the line and अब यहाँ से इसको छोड़ना है और योग को अपनाना है? In my case, probably I was, even while I was in the corporate sector, moving in a direction where I wanted to search for things which had to do with things which are not so outward, and probably once I had a taste of it, it fitted into my mental mapping and my attitude and me as a person, and so I went in that direction. But I would not advise people to leave this Maya world and run away somewhere into some unknown, unhospitable terrain. I don't think that is the idea of life. But in my case, this is what worked for me, and that's how I arrived where I did. Okay, so one thing which is very clear is जब भी आप yoga practice करना शुरू करते हैं, you get this aura that you can actually see जो नम्रता के face पर है. So that charm, that aura, that automatically comes. But इसके अलावा, what are the key benefits that which are very visible जो योग से आता ही है? So yoga is a science, and yoga is trying to improve you in every way. The techniques of yoga basically are like cleansers. They are purification exercises. So as you grow older and you interact with the world and with yourself, many times you pick up a lot of physical, mental, spiritual impurities on the way. So it's like a detoxification exercise. So whether you do yoga for half an hour, you give up your life for it like I did, what you're trying to do is you're trying to purify, cleanse your system. And like anything that you purify and cleanse, the effect is that it starts shining, right? So when stuff starts shining, it gives out a certain kind of a glow to it. And normally it performs in a better way, whether it's a machine like your body or it's a machine like your mind. So yogic techniques basically can be used to improve and make more productive your performance personally, your performance in your relationships, your performance at your work, your performance at sport, depending on who you are, what you want. आज का अगर अभी का जो generation देखें, the Gen Z especially, all those who are watching us here on Instagram or on YouTube, they want results very instantly. They want success very instantly. Does yoga help here? It's not like you cannot get results fast, but then that depends on the effort you put in. True. So the more intensity of practice in anything you do, including yoga, the faster the results. But nothing happens instantly in life. That's not life, and that's not reality. So you need to stick to life and reality for what it is.
one more thing which all of us millennials and Gen Zs they are dealing to is stress. And ये एक ऐसी चीज़ है जो चाहे वो एक 10 साल का बच्चा है to a 40 years old, वो हर एक की लाइफ में है. And the more you try to get rid of it, the more it comes. I don't know what's the reason, and even if we know the reason, we don't know how to get rid of it. So how does yoga help us in getting rid of stress? Yeah, so I think this is one thing in which the kind of role yoga is playing and will play in the future, because today's generation, the future generations are going to deal with more and more stress, and it's having a lot of psychosomatic ailments which result from stress. There are a lot of behavioral issues which are coming into society because of stress. So there is nothing like yoga today, not only to make you understand, but then start dealing with stress, because yogic techniques are immensely relaxing. And relaxing just means they allow flow of energy into you in a much easier way, depending on what kind of energy you need. For a simple thing, like a lot of people have sciatica out of stress, back pain. So yogic exercises by simple physical stretches allow tension in those parts of your body to ease out and allow energy to flow in, and you'll suddenly feel, oh, मैंने yoga किया और मेरा back pain ठीक हो गया. It can be mental, you're in depression and you just get into just simple deep breathing exercises that clears your mind, and suddenly that depression seems to have gone away, and you say, oh my God, this is amazing. True. So I think yoga is something which in this century and in the future is not going to be a choice, it's going to be a mandatory. Actually, any thoughts on people who are just thinking of bringing yoga into their lives? How should they start? How should they begin? Or any thoughts about them? So I keep repeating this, that I don't think today yoga is anymore going to be a choice, Rahul. It's going to be something that is a mandatory in life, because life is full of a lot of stress and a lot of tensions that you take mentally, and there is no science which is as fit to deal with this stress and deal with the mental issues you have as yoga has. How you start it depends a lot on the kind of person you are. There are people who are very physical, for instance. So physical techniques in yoga are a great way to start for them. You can do Ashtanga yoga, which is very physical, or there are many different styles of yoga. There are people who are very introverted, who are very prone to wanting their space and being quiet and stuff. There are many amazing schools of yoga and techniques of meditation which they can pursue. Also, there is this aspect of yoga which I talk about a lot, which is where I started, which is the breathing aspect, which is pranayama. My forte is basically there. That's how I started yoga. So it depends on your personality. The science is so big that it allows for any kind of personality to fit in and start where they want. I don't think I would advise everyone to start in a particular way. Okay. I think they should explore the science. They should read about it, talk about it, expose themselves to it, and then take a decision, just like you do with so many other things in life. True. Who you want to be, whether you want to be an RJ, or you want to be somebody who is shooting like Neeraj is here, or a yoga, a yoga teacher. Yogacharya. Like me. So, in the life of a yogacharya, that's my last question before we leave. You must be doing a lot of workshops, but at the same time, a lot of vacations as well. So when you're out of your place, what is your favorite yogasana, your go-to yogasana position, which you love to do every day? You never miss it. So I really enjoy inward postures.
inward postures are where you are upside down. Okay. Right? So one thinks of it as a physical, system of turning your body upside down. But actually, we are Homo sapiens, who are standing on our legs. The only kind of living creature who actually stands on two legs, and our brain has gone up vertically on top. So when you turn yourself upside down, all the energy tends to flow towards your brain and has amazing effects on the way you are feeling, thinking, your consciousness. So inward postures are definitely my favorite. They relax you, they make you feel a little more alive, and of course they are very challenging because you're upside down and you need to balance. So I really enjoy those. Amazing. Thank you very much, Namrata. It was lovely having you with us on thank you on this World Yoga Day. And जाते मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि the perfect example of a yogi is here, sitting right besides me, so you can actually see the charm, the glow, the aura on her face. तो फिर अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि योगा के क्या-क्या फ़ायदे हैं. So वो फ़ायदा आपके बिल्कुल सामने है, and the best part is you cannot guess her age. इसलिए मैं पूछ भी नहीं रहा. Thank you very much, and it was lovely having you. Thank you. Thanks a lot. चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो. चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो. हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो. चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो. चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो. हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो. खोजी जो हमने ये चीज, विदेशी भी देते या मोटी है फीस. खुद की इजाद की खुद की ही जीत, पर भूलो ना तुम ये अपना ही सीट. कोविड के टाइम पे दिया था ध्यान, बॉडी और सोल को दोनों आराम. योगा का योग कर तेरी ही जीत, प्रयास प्राणायाम योगा से सीख. है फायदे बहुत किफायती भी, योगा से होगा बस भाई तू सीख. चले सब साथ में अपनी ये रीत, ये खुद की ही जंग तो खुद से ही जीत. अनुलोम विलोम से रासना, भुजासना शवासना, योगा के योग की बात ना, ये लेवल है नेक्स्ट कोई पास ना. साथ में चलेंगे सब, है साथ की बात तो साथ में करेंगे सब. क्या योगा योगा होगा. चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो. चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो. हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो. चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो. चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो. हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो. So before we begin, there's something you need to know कि yoga is a personal journey. हर किसी का एक्सपीरियंस अपने में ही यूनिक होता है, और हमारी आज एक कोशिश है कि आपके इस एक्सपीरियंस को आपके लिए हम स्पेशल बना सकें. योगिनी सृष्टि, आपका जो ऑरा, मुझे अभी भी वहां से जो फील आ रही है, जो वाइब आ रही है, आई हैव टू से इट्स सो फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ योगा बूट कैंप 3.0. कैसे हो आप? मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ. थैंक यू सो मच उपासना, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए. वही मेरे बचपन से जब भी मैं जाती थी गाड़ी में FM सुनते जाती थी, मैं ये था कि एक दिन मैं भी FM पर आऊँगी. तो आप वो मुझे मेरा सपना सच करने में हेल्प करें, तो थैंक यू सो मच. पहला सवाल तो योगिनी सृष्टि, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हाउ डिड दिस ब्यूटीफुल जर्नी बिगिन?
मेरे स्कूल से ये स्टार्ट हो गई थी। स्कूल से पहले मतलब 8th के बाद मैंने अपना स्कूल चेंज किया था, तो उससे पहले भी मैं एथलेटिक्स में थी। पढ़ाई में मैं इतनी कुछ खास नहीं थी, तो मुझे पता था कि यहाँ पे तो कुछ होने वाला है नहीं और मैं एथलेटिक्स में काफ़ी अच्छी थी। फिर जैसे मैंने स्कूल चेंज किया, इतना अच्छा कोइंसिडेंस, सेकेंड जो स्कूल था उसमें योग कंपल्सरी था। एक पीरियड योग का हमेशा होता था उसमें, और वो गर्ल्स स्कूल था, तो उसमें फर्स्ट पीरियड फर्स्ट स्कूल का फर्स्ट डे योग का था। मैंने योग किया, सबने किया, और उसी दिन जब जैसे छुट्टी होती थी ना स्कूल की, तो छुट्टी में मैं बस में बैठी हुई थी, मेरे पास एक लड़की आई, उन्होंने बोला कि आप योग में बहुत अच्छी हो, आप आगे जाना चाहोगे इसमें, आप हमारे साथ दूसरी सिटीज में जाओगे योग का वो करने, अपना दिखाने। तो मैंने सोचा पहले तो कि पहला दिन है, कहीं ऐसा तो नहीं है रैगिंग हो रही है, पर यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है, बहुत संस्कारी टाइप जो स्कूल्स होते हैं ना, जिसमें नीचे आलती पालती मारकर प्रेयर्स होती है, वैसे वाला था वो। एक बात होती है जब हम किसी योगा गुरु से मिलते हैं, एक्सपर्ट से मिलते हैं, तो जो शुरुआती दौर होता है, ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस अगर आपके भी इस एंटायर जर्नी में अगर आपने कभी वो देखे, तो चैलेंजेस क्या हुए होंगे, और ऐसी कौन सी वो बात थी जो सृष्टि आपको हमेशा मोटिवेट करती रही? चैलेंजेस तो प्रैक्टिस से लेकर और सक्सेस मिलने तक, और बीच में जो भी कुछ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो सबसे पहले तो पेरेंट्स, ये तो एक सबसे बड़ा था कि घर वालों को नहीं पता था कि कैसे इसमें आगे आप बढ़ सकते हो। अभी वही बोलते हैं कि योगा तो बेस्ट है, अभी घर के बच्चे भी सीख रहे हैं तो मैं एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि भाई अपना इरादा पक्का होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी A to Z, अगर आप अपनी निश को, अपने उसको पकड़ के चलो, दृढ़ता के साथ चलो ना, आपको तो मंजिल जरूर मिलेगी, आप किसी भी फील्ड में हो। तो आपकी लाइफ में आपके गुरु कौन है जिसको लगता है कि आपके वो दिल के बहुत करीब हैं, उन्हें देखकर आप हर बार और मोटिवेट होते हो? तो हु इज दैट स्पेशल गुरु इन योर लाइफ? आज हम ये भी जानना चाहेंगे। ओके, तो अभी तो मैं ये बोलूंगी, मेरी नजर में मैं अभी बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इसमें मेरे अलग अलग गुरु रहे हैं, पेरेंट्स ने हेल्प किया है, हस्बैंड ने हेल्प किया बहुत ज्यादा, तो सबकी मदद से हम आगे आ पाए हैं। Someone like me जिसको ना योगा की शुरुआत करनी है अपनी जिंदगी में, योगा को अपने लाइफ में शुरुआत से ही शुरू करना है, तो बिगिनर्स के लिए आज इस वर्ल्ड योगा डे में आपका वो पैगाम क्या होगा, वो गाइडेंस क्या होगा? अच्छा, पता है सबसे बड़ा रीजन हमारा प्रैक्टिस बीच में छूट जाना ये रहता है कि हम ना एक तरीके से ये समझ लो कि एक ऐसा हार्मोन की वेट करते हैं, ऐसी मोटिवेशन की वेट करते हैं कि वो होगा, किक स्टार्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, 1 तारीख का वेट करेंगे या 21 का वेट करेंगे। हाँ, तो मैं तो एक ही सीख देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वी ऑल आर ग्रोन अप्स, ठीक है? मोटिवेशन इज ओवररेटेड, डिसिप्लिन इज ओवर एवरीथिंग। कल सुबह उठना है, रात को ही अपने कपड़े लगा कर रखो, बाहर बॉटल रखो, योगा ब्लॉक्स रख दो, मैट बिछा कर रख दो। सुबह उठोगे, देखोगे कि रात को इतनी मेहनत करी थी, चलो 15 मिनट कर ही लेती हूँ, तो आदत बन जाएगी, डिसिप्लिन में आ जाएगा। मेडिटेशन करना आसान है, अगर किसी को अगर ये फोकस नहीं आ पा रहा है, तो कोई मंत्र है जो आज आपसे मिल जाए? ओके, तो मंत्र का नाम है योगिनी सृष्टि। तो मेडिटेशन का, हाँ, तो मेडिटेशन का यही है कि स्टार्टिंग में खुद से आप करोगे नहीं हो पाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आप सोच रहे हो कि मैं बैठकर ज्ञान मुद्रा में और ध्यान लगाऊं, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आप ध्यान लगाओगे, आप सोचोगे अपने ट्रेंड्स के बारे में, सोचोगे अपने क्या चल रहा है आजकल, तो उससे बेटर है कि आप किसी के गाइडेंस के अंदर करें। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी बॉडी स्कैनिंग से शुरू करें मेडिटेशन। ब्रेन बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा ताकतवर होती है ना ये चीज, बहुत ज्यादा, आपकी बॉडी को जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की, इतनी ज्यादा हीलिंग पावर्स हैं। हम खुद ही तो हील होते हैं अंदर से ना, बिल्कुल। वो सारी चीजें जो बाहर से ले रहे हैं वो खुद ब खुद अंदर हैं ऑलरेडी। तो वही माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन बनाने के लिए आपकी गुरु हेल्प करते हैं, योग की आसन की मदद से, प्राणायाम की मदद से, मेडिटेशन की मदद से, और फिर जब आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले। बिल्कुल बल्ले बल्ले। वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो सृष्टि योगा के एक्चुअली बेनिफिट्स क्या है जो आपके ना हाथों के बस उंगलियों में ही है आपके? वो
तो क्या करें? उंगलियां कम पड़ जाएंगी, टाइम भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं गिनवाने के लिए आऊँ ना, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आप ये देखो, योग इट्स नॉट अ वर्कआउट, इट्स अ वर्क इन। आप अंदर से अपने आप को ठीक करते हुए चलते हो, तभी थोड़ा टाइम लग जाता है बाहर रिजल्ट्स देखने में, पर अंदर से योग आप करोगे, आपके ऑर्गन्स आपको थैंक यू बोलेंगे, उनको और मसाज करते हैं लिटरली हम योग में, आसनों में अपने ऑर्गन्स की मसाज करते हैं, उनको और एक तरीके से सर्कुलेशन अच्छी करते हैं वहां पे ब्लड की। तो अंदर से जब सब कुछ ठीक रहेगा, एज भी आपकी बढ़ेगी, ऑर्गन्स भी आपको थैंक यू बोलेंगे, आपके उतने चांसेस कम होंगे दवाई लेने के। योग डे का बस यही है, ऐसा कम्युनिटी हम एक साथ आते हैं और ये हमें मौका देता है एक साथ आने का एज अ कम्युनिटी, और लोगों को और जागरूक करने का ये मौका देता है। तो मैं तो मानती हूँ कि इस दिन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं होता तो हम आज साथ नहीं होते उपासना, हम आज साथ नहीं होते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक तरीके से, और लोगों को और जागरूक करने के लिए कि योग आपकी जिंदगी में क्या रंग भर सकता है। योग का मतलब जुड़ना, तो आत्मा का परमात्मा से, लोगों का लोगों से, बॉडी का माइंड से जुड़ना ही योग है। और हैप्पी इंटरनेशनल योग डे। लव। आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। खोजी जो हमने ये चीज, विदेशी भी देते या मोटी है फीस, खुद की इजाद की खुद की ही जीत, पर भूलो ना तुम ये अपना ही सीख। कोविड के टाइम पे दिया था ध्यान, बॉडी और सोल को दोनों आराम, योगा का योग कर तेरी ही जीत, प्रयास प्राणायाम योगा से सीख, है फायदे बहुत किफायती भी, योगा से होगा बस भाई तू सीख। चले सब साथ में अपनी ये रीत, ये खुद की ही जंग तू खुद से ही जीत। अनुलोम विलोम से रासना, भुजासना शवासना, योगा के योग की बात ना, ये लेवल है नेक्स्ट कोई पास ना। साथ में चलेंगे सब है साथ की बात, तो साथ में करेंगे सब क्या, योगा योगा होगा। चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। Face yoga, easy, effective, highly beneficial exercise that will tone, brighten and bring natural glow to your face. Namaste, this is Mansi Gulati, your face yoga expert. We are going to do 5 face yoga poses for youthful, glowing skin. Let's start. Meditate your body. Close your eyes. Let's start with Om chant. Inhale. Let's start with air puff pose. Fill your mouth with air and shift air right to left. Keep your finger here.
release. A really good asana. It helps to strengthen your zygomatic major, minor, very good for increasing blood circulation, very good for activating your maxillary muscle too. Now let's do one more pose, which is also a beautiful pose, pout smile pose. Make a pout and smile as much you can. Good stretch. Now let's do small O and smile. Now we are going to give a beautiful stretch that will lift your facial fat up, help to increase blood circulation. Make a small O again. Relax, release. We'll do this again. Now we'll do balloon palming pose. Make sure we are placing our finger only. Let's do this one more time. Fingers. Let's do. Fill your mouth with air. Let's do balloon smiling pose. Beautiful pose. Fill your mouth with air and smile as much you can. Now we'll do very simple massage. We'll start from forehead area. Place your finger like this and make a circle. Release. Eye.
We can do this without oil also. Make a circle again. Down. Release. Amazing massage, relaxing face yoga asanas. Hope you like it. Thank you. चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो ओजी जो हमने ये चीज विदेशी भी देते या मोटी है फीस खुद ही इजाद की खुद की ही जीत पर भूलो ना तुम ये अपना ही सीख कोविड के टाइम पे दिया था ध्यान बॉडी और सोल को दोनों आराम योगा का योग कर तेरी ही जीत प्रयास प्राणायाम योगा से सीख है फायदे बहुत किफायती भी योगा से होगा बस भाई तू सीख चले सब साथ में अपनी ये रीत ये खुद की ही जंग तू खुद से ही जीत अनुलोम विलोम से रासना भुजासना शवासना योगा के योग की बात ना ये लेवल है नेक्स्ट कोई पास ना साथ में चलेंगे सब है साथ की बात तो साथ में करेंगे सब क्या योगा योगा होगा चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो एंड इस पूरे इंटरैक्शन के दौरान इस पूरे सेशन के दौरान हम आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि आप भी अपने सवाल आपके मन में कोई क्वेश्चन हो कोई एक्सपीरियंस हो एनीथिंग एट ऑल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर शेयर करें एक कम्युनिटी बनाते हैं जितने भी हम योगीज हैं सब मिलकर एक प्यारी सी कम्युनिटी बनाते हैं आज जिसके थ्रू हम योगा को सेलिब्रेट करें इंटरनेशनल योगा डे का माहौल बना हुआ है एंड हमने सोचा कि हाउ अबाउट गेटिंग दोस वॉइसेस जिन्होंने हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने का काम किया है हमने अपने लिसनर्स से पूछा whom would you like to have on the yoga bootcamp platform और एक नाम जो आया वो था सिस्टर शिवानी जी का बहुत बहुत स्वागत once again on the yoga bootcamp Om Shanti and बहुत बहुत शुक्रिया I want to start off the session with something that I always wanted to ask you. I was doing a bit of research on your life और उसमें मुझे ये मेरी टीम ने बताया कि आपने पूना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने की फिर ये स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग की तरफ कैसे जीवन ने मोड़ ले लिया इसके बारे में बताइए छोटी सी करेक्शन मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग की है मैंने मास्टर्स नहीं की है but this is some misinformation which goes onto the internet and then it just goes viral so just want to clear that but फिर मेरी लाइफ में कोई ट्रेजेडी भी नहीं थी कोई क्राइसिस भी नहीं था और अगर उस समय के हिसाब से देखें ना तो लाइफ वैसी नहीं थी जो आज है इन अ स्टूडेंट लाइफ लाइक इवन व्हेन यू आर डूइंग योर इंजीनियरिंग we didn't even know the word stress that time मतलब वो भी सिर्फ फिजिक्स में ही था इमोशंस में नहीं था एंड डिप्रेशन तो हमें पता
ही नहीं था तब कि क्या हुआ करता था. सो इसीलिए एंड अकेडमिकली आई वाज डूइंग वेल, तो मेरी लाइफ में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो समवेयर आफ्टर अ फ्यू इयर्स मैंने खुद से ही कह दिया एक दिन कि मुझे भी ये सीखना है. हमारे लिसनर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें से एक आदित्य का क्वेश्चन था. उनका यही था कि मेरे बच्चों को मैं योगा सिखाना चाहता हूँ. जब मैं बोलता हूँ तो वो कहते हैं ज्ञान मत दो. एंड राइट नाउ द ओनली थिंग आई एम डूइंग इज 3 महीने से मैं कंसिस्टेंटली योगा कर रहा हूँ. सो इज देयर एनी टिप टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस देम? वेरी सिंपल वेज. सबसे पहले हम खुद करते रहे. एंड दूसरी चीज है, आपको जो कहना है वो मन से कहिए, शब्दों से नहीं. यहाँ की जो वाइब्रेशंस है ना वो जल्दी पहुँचती है एंड वो उस ईगो के बैरियर को तोड़कर अंदर के मन तक घुस जाती है. जो मेरा ईगो कहता है आई नो व्हाट इज राइट फॉर मी, डोंट टेल मी व्हाट इज राइट फॉर मी, सो दैट इज माय ईगो. लेकिन जब आप मन से, वाइब्रेशन से, थॉट से भेजेंगे ना तो वो सीधा मेरे मन पर टच करता है. जो वर्ड्स होते हैं ना वो सिर्फ यहाँ तक पहुँचते हैं, जो थॉट्स होती है ना वो सीधा यहाँ तक पहुँचती है. सो एक हमें खुद वो करना चाहिए. हमारी वाइब्रेशंस उधर रेडिएट हो रही है. हमारे अंदर का चेंज, whether it is a physical change, whether it is an emotional change, हमारे अंदर का चेंज सबको प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है. और फिर यहाँ से एक पावरफुल थॉट कीजिए अपने बच्चे के लिए. आई एम सर्टेन कि वेरी सून आई एम गोइंग टू सी यू सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड टुगेदर वी विल बी डूइंग योगा टुगेदर. क्रिएट दैट पावरफुल विजुअल एंड अफर्मेशन एंड आप बहुत जल्दी उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे अपने जीवन में. आदिल हुबली से ये पूछना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं पहले कि आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत इंस्पायरिंग हैं एंड बहुत अच्छा लगता है. बट ही ऑलवेज वंडर्स कि क्या आपको कभी गुस्सा आता है? डू यू फील इनसिक्योर या आप में वो भाव कभी आता ही नहीं? ना, ऐसा तो नहीं है. बिल्कुल बहुत लंबी जर्नी है ये, टू मूव फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू रीच. इट्स अ जर्नी. ये एक स्विच नहीं होता ऑन एंड ऑफ कर दिया, ऐसा वाला स्विच नहीं होता कि आज गुस्सा था और कल ख़त्म हो गया. लेकिन गुस्से की डेफिनेशन चेंज हो गई, गुस्से का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब गुस्सा आया तो 1 सेकेंड में पता था कि ये दूसरे की गलती नहीं, ये अपनी क्रिएशन है. तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, अभी भी आता है. लेवल चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको जल्दी ठीक करना आ गया. So that I feel is the power, but have to reach a stage जब वो कभी नहीं आएगा एक भी thought में, but I will reach there. I have to work on it. This has come on behalf of Neha. Neha says that I work for a startup organization and पिछले 3 साल में 3 कंपनियां बदली हैं. And while there is a lot of glamour associated with the startup world, there is a lot of stress. The top boss wants to impress the investors, and the person below him wants to impress him. So you are trying to create a value which is not really there. So it's an artificial valuation that you're building. और उसका stress हम सब पे आता है. And we live continuously in a fear कि आज situation ऐसी है workplace में, कल बदल जाएगी. And I see everyone like that. तो ऐसे में while मन को मैं शांत करने की कोशिश करती हूँ, but it becomes difficult sometimes. And I you know, she started off from a government job. She quit that and she joined the startup. So अब मैं थोड़ी परेशान हूँ. मुझे ये पता है if I stick here for long, I'll be successful. But staying is becoming difficult. Okay. सबसे पहली चीज वोकैबुलरी को चेंज करते हैं कि स्ट्रेस इज इन द वर्कप्लेस. स्ट्रेस वर्कप्लेस पे होता नहीं है. स्ट्रेस हमारे माइंड की क्रिएशन होती है. तो स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला है जो फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. प्रेशर इज इन द वर्क प्लेस. तो वो सारी जो आपने बातें बताई कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये सारा कुछ वो न्यूमरेटर है, प्रेशर. जैसे एक बच्चे के लिए एग्जाम एक प्रेशर है ना. एक बच्चे के लिए एग्जाम एक प्रेशर है, लेकिन बच्चा कहता है एग्जाम स्ट्रेसफुल है. एग्जाम स्ट्रेसफुल नहीं है, एग्जाम एक प्रेशर है. प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब मेरी आंतरिक शक्ति, माई इनर पावर टू कोप विद दैट प्रेशर. तो सेम एग्जाम, अलग अलग बच्चे, अलग अलग स्ट्रेस लेवल. और अगर एग्जाम कॉज ऑफ स्ट्रेस होता तो हर बच्चे में सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस क्रिएट होता. इसी तरह आपकी कंपनी में सेम प्रेशर्स, सेम चैलेंजेस, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग स्ट्रेस लेवल हो रहा होगा. किसी को आपसे भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा और किसी को आपसे कम हो रहा होगा. Which means the stress is not in the workplace.
इट इज़ हियर इन द माइंड. दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नहीं तो हम अपनी जीवन बिता सकते हैं ये कहकर इस जगह के मेरे अंदर स्ट्रेस है, मेरे काम के अंदर स्ट्रेस है, मेरे इसके अंदर स्ट्रेस है, कल मेरी शादी के अंदर स्ट्रेस होगा, परसों पेरेंटिंग के अंदर स्ट्रेस होगा, फिर मेरे ट्रैवल, एवरीथिंग सीम्स टू बी स्ट्रेसफुल. Nothing stress is not outside. It is my coping mechanism. अब इस डिनोमिनेटर को आप बिल्डअप कीजिए, क्योंकि प्रेशर आपके हाथ में नहीं है ना. चाहे आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं तो शायद आपके वहाँ के प्रेशर्स अलग होंगे, या आप स्टार्टअप में हैं अलग है ना, बिकॉज इट इज द न्यूमरेटर, वो अलग होगा. सो प्रेशर इज द आउटर वर्ल्ड, रेजिलियंस इज माई इनर वर्ल्ड. प्रेशर्स कम होने के चांसेस दिखाई नहीं देते इस टाइम. वैसे अगर हम ये ध्यान दें कि हर मूवी जो हम देखते हैं, हर किताब जो हम पढ़ते हैं, हम गाना जो हम सुनते हैं, हर मैसेज जो हम स्क्रॉल करते हैं, हर सोशल मीडिया हैंडल जो हम फॉलो करते हैं, वो सिर्फ कंटेंट नहीं है, वो हमारी इमोशनल डाइट है, वो हम बनते हैं. अब आजकल क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव नहीं, नॉर्मल कंटेंट, चाहे हम न्यूज़ चैनल से न्यूज़ सुन रहे हैं, चाहे हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसके अंदर ईगो है, लस्ट है, ग्रीड है, एंड द लिस्ट, या सोशल मीडिया पे कंपैरिजन है, जेलसी है, वैलिडेशन है, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे लाइक करें, पब्लिक ओपिनियन पे मैं, ऑल दिस कंटेंट, दिस इज़ एन इमोशनल डिप्लीटर. ये मेरी शक्ति को घटाता है, मतलब वो जो डिनोमिनेटर है ना उसको ये घटाता है. तो आप प्रेशर पे मत वर्क करिए, वो आपके हाथ में नहीं है. आप डिनोमिनेटर को बढ़ाइए. उसके लिए सबसे पहले कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, वही कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो आपको एनर्जाइज करेगा. और बाकी सारा दिन फ़ोन पे ऐसे ऐसे करते रहना, ये टाइम पास नहीं होता है, ये हमारी डेस्टिनी बनाता है. Content is equal to personality is equal to destiny. So restrict content consumption. And second, हर रोज कम से कम 15 मिनट प्योर पॉजिटिव कंटेंट अपने अंदर ज़रूर डालिए. मतलब अच्छी खुराक मन को ज़रूर दीजिए. आपका जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा. और अपने लिए जल्दी से 3-4 अफर्मेशंस लिख लीजिए. आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम हैप्पी ऑलवेज, आई एम इन द बेस्ट प्लेस ऑफ वर्क, जो मैं सबसे बढ़िया जगह पर हूँ मैं अपने काम करने के लिए. एंड आई एम सर्टेन कि सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी, सफलता मेरे लिए निश्चित है. आई एक्सेप्ट एवरीवन ओवर हियर एंड एवरीवन एक्सेप्ट्स मी. आप 5 थॉट्स क्रिएट कर लीजिए. रोज सवेरे इसको कहिए, रोज रात को इसको कहिए, खाना खाने से पहले कहिए. और थोड़े दिन में आप वहाँ पर कंफर्टेबल होने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी माइंड की कोडिंग चेंज होने लगेगी. आप अपने आप के साथ, क्योंकि आपने चूज़ किया है वहाँ आना, वो नहीं आए थे आपके घर आपको लेने के लिए, हमने चूज़ किया है. नाउ लेट्स बी देयर विद द राइट एनर्जी, विद द राइट वाइब्रेशन. आप रहेंगे वहाँ, आप सक्सेसफुल भी एक दिन हो जाएंगे. लेकिन अगर स्ट्रेस के साथ हुए तो फिर उसमें मज़ा नहीं है. कि आपकी वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी तो बहुत हाई चली गई, आपकी पर्सनल भी बैंक बैलेंस बहुत ऊपर चला गया, लेकिन स्ट्रेस आ गया जीवन में, आगे कोई बीमारी आ गई तो मज़ा नहीं है. तो इसीलिए कोडिंग करिए, अपने माइंड की थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए. बाहर भी सक्सेस को अचीव कीजिए, लेकिन यहाँ हैप्पीनेस और हेल्थ को अचीव कीजिए. देन इट्स ट्रूली सक्सेसफुल. फैंटास्टिक. बहुत ही कमाल तरीके से आपने सारे सवालों के जवाब दिए और it was one amazing session. I am taking out so many things from this session and I'm sure a lot of our listeners and viewers must have thoroughly enjoyed this session. तो बहुत शुक्रिया for your time and for your wisdom. Shukriya Sharad ji. Shukriya for the beautiful questions and shukriya to all who have shared their questions with us, which helps us so much. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो. सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो. चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो. हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो. चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो. सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो. चलो उठो आगे
आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो खोजी जो हमने ये चीज विदेशी भी देते या मोटी है फीस खुद की इजाद की खुद की ही जीत पर भूलो ना तुम ये अपना ही सीख कोविड के टाइम पे दिया था ध्यान बॉडी और सोल को दोनों आराम योगा का योग कर तेरी ही जीत प्रयास प्राणायाम योगा से सीख है फायदे बहुत किफायती भी योगा से होगा बस भाई तू सीख चले सब साथ में अपनी ये रीत ये खुद की ही जंग तो खुद से ही जीत अनुलोम विलोम से रासना भुजासना शवासना योगा के योग की बात ना ये लेवल है नेक्स्ट कोई पास ना साथ में चलेंगे सब है साथ की बात तो साथ में करेंगे सब क्या योगा योगा होगा चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो Hi, what's up? This is RJ Sheetal and you are watching Yoga Bootcamp 3.0. Well, it's time to yogafy your life with Yoga Bootcamp 3.0 presented by Fever 104 FM. Well, I'm in conversation with the Shilpa Shetty Kundra. I know she needs no introduction, but let me tell you, apart from being an actor, a mom and an entrepreneur, she's a mindful yogi, a wellness influencer and an eternally positive thinker. On this note, I want to start off by asking how and when did you start your journey? मैं actually एक injury से जूझ रही थी. I had cervical spondylosis around 20 years ago while working out. और मैं फिजियो कर रही थी तब फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं भुजंग आसन करूँ और थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग के लिए योगा सीखना शुरू करूँ. तो तब की बात और अब की बात अभी मैं योगा एडिक्ट हो गई हूँ एंड I feel very happy that I'm able to play catalyst in people's wellness journey through yoga. मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे changes मैंने महसूस किए एंड आई जस्ट फेल्ट कि जब भी मुझसे लोग पूछते थे कि आप अपने आप को ऐसे मेंटेन कैसे करती हैं और वेयर यू गेट योर स्ट्रेंथ फ्रॉम, आप हमेशा इतनी पॉजिटिव कैसी हैं, तो घूम फिर के बात योगा तक ही आती थी एंड उसका बहुत सारा श्रेय योगा को जाता है. And I really feel that I'm able to do all these things and dabble with all these different roles क्योंकि I feel aligned, तो माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन होना और अलाइनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. मुझे ऐसे लगता है कि हम थोड़े से बिखर गए हैं एंड स्पेशली आफ्टर कोविड. तो ये जो जर्नी रही है मेरी योगा के साथ वो वहाँ से शुरुआत हुई एंड टुडे this new improved version, this 2.0 version of Shilpa Shetty is because of yoga. So what changed within you? I think that every day is a learning curve. आप रोज अपने आप को डिस्कवर करते रहते हो, especially if you are a yogi. बदलाव तो बहुत सारे आए हैं, but I have realized that एक ठहराव सा आ गया है. और मेरी सोच जो है, मैं पहले भी बहुत हमेशा पॉजिटिवली ही सोचती थी, लेकिन अब एक वो दृढ़ विश्वास और एक विल जो एक बार मैं ठान लेती हूँ वो मतलब मैं करके ही छोड़ती हूँ, वो आया है योगा के साथ. तो ये एक बदलाव आया है और टू हैव कंट्रोल ओवर माई माइंड. So, do yoga instructors follow a specific diet to receive all the benefits? I think योग में सबसे पहली चीज जिस पे हम emphasis देते हैं is balance. And I'm not talking about balance that you find through doing an asana, or balance is not about balancing an asana. It's something you create. It's बैलेंस का होना बहुत जरूरी होता है. आप अपनी मैं बोल रही हूँ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एन आसन बट ऑल्सो आपके प्रोफेशनल जिंदगी हो या आपके व्यक्तिगत जीवन की बात मैं कर रही हूँ. आई जस्ट फील के वो चीज इज द डिफरेंशिएटर.
उस चीज का होना, तो खाने में भी बैलेंस का होना, उसकी समझ होना, उसके बारे में समझ का रखना बहुत जरूरी है. So I feel a lot of people know about it but don't live in awareness. तो वो awareness का होना बहुत जरूरी है, and that is the way I lead my life. So all the moms out there, you know, when they look at you, they feel that after being a mom, their body is not very flexible, right? And they want to do yoga like the way you do. So what's your take on it? सबसे पहले तो मैं उन माओं को बोलना चाहूंगी और उन लेडीज को बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इस गलतफहमी को निकाल बाहर कीजिए अपने दिमाग से कि योगा इज अबाउट just twisting your body and becoming like a pretzel. ऐसा नहीं है. Yoga helps you align your mind, body, soul, and it is a journey through which you will get to know your inner self. And बस शुरुआत तो करिए और फिर आप देखेंगे you will be on an onward journey to rediscovering yourself. तो अगर और जरूरी नहीं है, योगा में कहीं लिखा नहीं गया है कि आपको हर आसन को परफेक्ट करना है. जरूरी नहीं है कि आपको पश्चिमोत्तानासन में आपके सर को या नाक को अपने नीज तक पहुंचाना है. You will realize with every time you do it, consistency will perfect you and get you closer to your goal. So what yoga teaches you is the fact that एक गोल आप रखो और उसकी तरफ आप चलना शुरू करिए और आप चलते चलते उस गोल तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की जरूरत है. तो आप शुरू तो करिए, प्राणायाम से शुरू करिए, and you see the world of a difference it will make in your world. So this is Yoga Bootcamp 3.0, right? So what is that one message you want to convey through our bootcamp on this International Yoga Day? हर इंटरनेशनल योगा डे पे मैं एक मैसेज देती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि हम भूल जाते हैं 22 जून को जो हमने 21 जून पे बात की थी. हम बहुत उत्साहित होके इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को मनाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अच्छा कल हमने बात की थी उसके बारे में, योगा के बारे में, लेकिन हम करेंगे शायद 1 महीने के बाद. 1 महीना निकल जाता है, फिर 2 महीने निकल जाते हैं. आई जस्ट फील के योगा एक व्यायाम की तरह से उसको ना देखें. मेक इट योर लाइफस्टाइल. एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी हमेशा से पता नहीं, मैं ट्राई करती हूँ रीच आउट करने की. जितने मुझे फॉलो करते हैं एटलीस्ट उनको तो टारगेट करूँ और उन तक इस बात को पहुंचाऊं कि यार if this has made a big difference in my life, it can make the same difference and maybe more to your life. Holistically देखा जाए तो yoga is the only form of or science that can holistically shape your body, shape your mind, stretch you, make you more flexible, make you stronger. तो जब इतने सारे बेनिफिट्स एक साथ मिल रहे हैं आपको, आप क्यों नहीं ट्राई करना चाहते हैं? सो आई वांट टू टेल पीपल आपके माध्यम द्वारा कि डोंट प्रैक्टिस योगा बिकॉज यू वांट टू गेट बेटर एट योगा. प्रैक्टिस योगा बिकॉज यू वांट टू गेट बेटर एट लिविंग. सो दैट इज माय आई थिंक बिन माय मंत्रा एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे आपके जरिए. And I really feel कि your body is a reflection of your lifestyle, है ना? At the end of it all, आप जो करते हैं, मैं बंदे के बॉडी को देख के बोल सकती हूँ कि ये बंदा कैसे खाता है, कैसे जीता है. And that really it is really left in your hands. आप अपना मन बना लो एक बार और देखिए कि आप क्या क्या अचीव नहीं कर पाएंगे. On that note, what is that one message you want to convey to all your fans out there? मैं हमेशा कहती हूँ योगा से ही होगा. जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, and there's no better therapy and no better medicine than that. Well, thank you so much. That was my conversation with Shilpa Shetty on her yoga journey. This is Yoga Bootcamp 3.0 presented by Fever 104 FM. Bye.
चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो खोजी जो हमने ये चीज विदेशी भी देते या मोटी है फीस खुद की इजाद की खुद की ही जीत पर भूलो ना तुम ये अपना ही सीख कोविड के टाइम पे दिया था ध्यान बॉडी और सोल को दोनों आराम योगा का योग कर तेरी ही जीत प्रयास प्राणायाम योगा से सीख है फायदे बहुत किफायती भी योगा से होगा बस भाई तू सीख चले सब साथ में अपनी ये रीत ये खुद की ही जंग तो खुद से ही जीत अनुलोम विलोम से रासना भुजासना शवासना योगा के योग की बात ना ये लेवल है नेक्स्ट कोई पास ना साथ में चलेंगे सब है साथ की बात तो साथ में करेंगे सब क्या योगा योगा होगा चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो चलो उठो आगे चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो सुबह उठो योगा करो योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो चलो उठो आगे चलो दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो हमसे ही सीखे ये हम ही है जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो This is RJ Manasa from Fever FM Hyderabad for Yoga BOOTCAMP 3.0. Yes, यार योगा इंटरनेशनल डे है and it's a big day and योगा को तो बहुत सारे लोग मानते हैं मैं भी मानती हूँ. So let's talk about some benefits and advantages of yoga with our yoga guru Mehak Khanna. She's a health and wellness coach. So Mehak, hi, welcome to our Yoga BOOTCAMP 3.0. How are you doing? Thank you. Thanks a lot for inviting me to speak about yoga on International Yoga Day. I'm doing very good. And so I'll tell a bit about myself. Yes. So I teach yoga online for 2 women. And I've been teaching since last 6 years. And professionally, 100% my career switch happened last year itself. But I'm teaching since last 6 years, and I was into corporate. I have 8 years of corporate experience, and after moving into yoga, I think my life has changed completely, and I'm blessed to change the life of many others also, and trying my best to do that. Yes. Yeah, a lot of people say that how yoga changed their life. And there are so many different forms of workout, right? When one decides to stay fit, some hit the gym, some run and whatnot. Why yoga? You tell us that, please. What are the advantages and benefits of yoga, Mehak? So a lot of people think that yoga is about flexibility and mobility, or it's about strength and doing handstands or inversions. Some people think yoga is about going to hills and leaving your family and the world aside, but that's not the core essence of yoga. Yoga is more like a lifestyle. Yoga starts, like I would say, none of the exercise or any gym routine is like yoga, because what people think about yoga is only asanas, but asanas is just a very small part of yoga. It's not the entire yoga. Yoga has a lot of different stages. It's your entire lifestyle. It's the way you live. So I would explain, basically it starts, the yoga, like anybody's yoga would always start from a discipline and a duty towards outside world, and then duties towards themselves. So basically a discipline of mind, a discipline of I would say willpower, and thinking right about yourself, thinking right about the society, ahimsa, non-violence, doing all the right things, thinking positive in all the manner. Then the third stage of yoga comes, that's asanas. Asanas is very important to increase the blood circulation in your body, to make your body disease free, to remove all the blockages from your body. Then after that, another stage of yoga comes, that is pranayama. Then pranayama is a stage where it works on the energy channels of your body. The only thing that differentiates, I would say, a living body then from a dead body is the prana in the body.
That is the energy, right? A living body Right. has the energy, we have the energy, we are talking. A dead body, it doesn't have any energy. So pranayam in yoga, it helps to increase the energy. The word itself suggests pran and ayam. That is, ayam means increase, and to increase the prana in the body. So none of the other exercises, I would say, does this to a human body the way yoga does. Then different stages more comes where it helps to work on your mind. Dharana, that is concentration. Then comes dhyan, that is meditation. And then the last stage is bliss, that is samadhi. So, in our day-to-day life, I would say, where in 21st century, I would say yoga is very, very important to incorporate in your life, because where we are so much distracted every time, every second we are getting a phone call or a message or a notification or a like or a dislike, right? Where our mind is so much fluctuated all the time, right? And every time our mind gets fluctuated, we feel happy, our mind releases a hormone, right? A happy hormone. We feel sad, our mind releases a hormone, anxiety hormone, a stress hormone. Because of this, a lot of diseases are happening, right? So I would say yoga is very therapeutic in nature. How? Because it controls the mind in a very, in a very amazing way. So yoga is basically chitta vritti nirodh, basically controlling the fluctuations of your mind. So that is what attracts me to yoga. It's body, mind and soul. It's a total package. And for me, it helped me a lot during my COVID when I started doing my breathing technique. My meditation keeps me grounded. So I want to touch upon the mental health a lot today, because yoga really, really centers you. Do you really want to, tell us all, our audience, about how yoga helps us mentally, Mehak? Yes. So as Shri Shri Ravi Shankar ji says, I'm a big fan of him, that whenever something whenever somebody blames us, or whenever somebody says anything negative about us, or whenever somebody criticizes us, there's something in our mind that shrinks. And how he says, I truly believe this part where the mind is not inside the body, the mind is outside the body. So whenever any kind of criticism or negativity is there around us, there is something in us that shrinks. So as our mind shrinks more and more, we start feeling unhappy about ourselves, with our lives, and we start feeling lost. Whenever something like this happens, right, our mind shrinks and we start feeling sad, anxious about everything, and due to which a lot of depression cases are also happening, right? And we also feel very restless all the time. So how yoga helps in this? When we do pranayam, we create some space inside, we become aware of the breath, we try to concentrate our entire mind towards one thing, we try to quiet the mind. The mind is continuously talking, it's generally called monkey mind, where it is always going from one thing to another, and people just keep overthinking and they become so much restless after overthinking. So there's this one way to quiet the mind ko chup kaise karaye. The moment you start quieting the mind is the moment when the meditation happens and the concentration happens. So that really, really is helpful, and it basically helps to expand the mind. How I said in the beginning that our mind shrinks when something negative happens around us. So when you try to incorporate different breathing exercises, pranayam and meditation in your routine, your mind starts expanding. You start feeling happy for no reason at all. You start feeling bliss. I have experienced that myself, so I can vouch for it. Everything becomes so positive and calm around us. The whole negative energy sort of fades away. Now, moving on to the next question. What age do you recommend, Mehak, is the right age for somebody to start doing yoga? I would say there is no right age to start yoga, since as I mentioned, yoga is not only about asanas. Somebody who is just sitting and doing pranayam, a kid, it can also be considered as yoga. It is yoga. And somebody who is, let's say, in her 80s or 90s can also do yoga, right? But the intensity of the yoga will change. A lot of people also say that I'm not flexible, so I cannot do yoga. So it's not about your flexibility. You become flexible once you start doing it.
But Yes, again, the core part, the reason to do yoga is not to attain flexibility. And again, there is no age bar. You can do it in any age. But there are certain practices, something like, as I mentioned, Ashtanga yoga and power yoga and let's say hot yoga. All these things are best, when done between the age, I would say 20 to 40, because these require a lot of strength and stamina. But there are a lot. I would say this is just a 10% of yoga. The same is with yoga. When you are doing a very basic level of yoga, some basic stretches, and then like you don't need a trainer. Like you can actually see some like video on Instagram or on YouTube, and you can just follow along with the video. When it comes to an intermediate level of yoga, how would you know it's an intermediate level of yoga? Any kind of posture, let's say a posture can be a basic for me and an intermediate for you, right? So whenever in any posture you feel that, okay, here I'm feeling a stretch, here I'm feeling some pain in the body, or I think this is going outside my comfort zone, that would be an intermediate level for you. And that would be a position where you can say that, okay, I have tried the basic level, now it's my intermediate level and I should go for a trainer now to correct my alignments, to understand the right breathing techniques. Yes, very true. And now another thing is, about yoga, a lot of myths are around yoga, a lot of myths. What is the one most common myth you want to burst, Mehak? Because one of the most silliest things that I have heard, you have to turn vegetarian to do yoga. I'm like, no, you don't. Which is the one you want to burst? I would say you have to turn vegetarian to be a yogi. There is a difference between being a yogi and doing yoga. You can eat non-veg if you are pursuing yoga. That's a myth. One of the biggest myth that comes along with it, and it's very funny, people think that yoga is for weight loss. And a lot of people come to me that, Mehak, I want to lose weight. Do you have any weight loss yoga? So there's nothing called weight loss yoga. Yes, people do incorporate a lot of gym exercises in it to make it weight loss yoga. But weight loss is generally a small byproduct of yoga, but it should not be, it's actually, it should not be considered only for weight loss. I so get it. Diet. People, will have to eat, right? Now, moving on, is there anything we can do, something simple, for our back while we are sitting on the chair and working, Mehak? Anything Definitely. you want to tell me? I'll just show you quickly while sitting on the chair itself. So let's say this is the chair and this is how we are sitting. The first asana can be, you can take the hands up, you can follow along with me, you can do it here itself. Stretch it up and take 3 deep breaths while looking up towards your hands. And after that, you lean towards your right side, slightly. A bit lean, keeping the head in the center of your arms. Come back center. You inhale here, deep breathe in, and you exhale, lean towards your left. This is one. Now take your hands down, take your right hand up and your left hand down, try to hold your hands. Oh yes. I can touch my hands. Much helpful for the shoulders, it's going to be very much helpful for your back. This is this is basically taken from Gomukhasana. You can change hands. Oh, this is going to help me a lot because all my stress sits on my shoulder and my back. Now coming fantastic. Now, few neck asanas. This can be done, backward, forward can be done. One amazing asana for your hips and for your lower back would be, you can keep your right leg on your left knee like this and bend forward. Okay. Oh, I'm going to try this. It's going to feel very amazing for your hip and for your lower back. Oh, thank you so much for those easy asanas. Very easy. Like for working, I think it will make a lot of difference. But final message to all our viewers, our audience about yoga on World Yoga Day, Mehak, what would that be? I would say that try to incorporate yoga in your lifestyle,
make it a way of living and start with only 5 practices per day. You don't need to join any class. Just start with 5 basic yoga practices per day, 1 pranayam technique per day, and like you can actually like do maybe 1 meditation technique before sleeping. So this would be like a total of 10-minute routine, 5 minutes in the morning, 5 minutes in the night. This can be the starting of yoga, and you would actually start feeling a difference in your life just by adding this 10 minutes routine on a daily basis consistently. Instead of doing a 1-hour class in like 1 day a week, you can do just 10 minutes on consistent basis every day, 365 days a month, a year. Oh, fantastic. Thank you so much for covering mental health, physical health, teaching us few easy asanas on International Yoga Day. This is Mehak Khanna. She's a yoga expert. She's a fitness and wellness coach as well. And you can follow her on Instagram. And this is Yoga Bootcamp 3.0 on Fever FM. मैं हूँ RJ Manasa. Thank you so much for watching us. Thank you, man. Thank you so much. Happy Thanks, World Manasa. Yoga Day. नमस्ते, मैं हूँ आपकी नॉन स्टॉप निकी और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी कह रहे हैं टाइम टू योगाफाई योर लाइफ विद योगा बूट कैंप 3.0, जहाँ पर आज 8 बजे से लेकर फिलहाल 10 बजने वाले हैं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक योगा गुरुज ने एक्सपीरियंसेस के साथ और बहुत सारी बातों के साथ आई एम सो श्योर आपको ये जरूर यकीन दिला दिया है कि योगा से ही होगा। तो आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर पूरे फीवर एफएम नेटवर्क की तरफ से आपको तहे दिल से थैंक यू। और हाँ, तैयार रहिए फॉर योगा बूट कैंप 4.0। चलो योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। खोजी जो हमने ये चीज, विदेशी भी देते या मोटी है फीस, खुद की इजाद की खुद की ही जीत पर भूलो ना तुम ये अपना ही सीख। कोविड के टाइम पे दिया था ध्यान, बॉडी और सोल को दोनों आराम, योगा का योग कर तेरी ही जीत, प्रयास प्राणायाम योगा से सीख। है फायदे बहुत किफायती भी, योगा से होगा बस भाई तू सीख। चले सब साथ में अपनी ये रीत, ये खुद की ही जंग तो खुद से ही जीत। अनुलोम विलोम से रासना, भुजासना शवासना, योगा के योग की बात ना, ये लेवल है नेक्स्ट कोई पास ना। साथ में चलेंगे सब है साथ की बात, तो साथ में करेंगे सब क्या योगा योगा होगा। चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो। चलो उठो आगे चलो, योगा को लेके तुम आगे बढ़ो, सुबह उठो योगा करो, योगा के बिना नहीं होगा कुछ ब्रो। चलो उठो आगे चलो, दुनिया को देन ये अपनी है ब्रो, हमसे ही सीखे ये हम ही है, जीते इस गेम के ओजी हम ही है ब्रो।